So as you know, we have a multiple services on a single app, whether it's food delivery, grocery delivery, dining out. तो इसका जो benefit हमें मिल रहा है across our businesses is multifold. So we are able to demonstrate this through the numbers. जो ये चार्ट में आप देख रहे हो कि the first year FY 2019 में जो यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आए उन्होंने 100 रुपया खर्चा किया, वो इस साल 283 रुपीज़ खर्चा कर रहे हैं, मतलब 3 गुना वो अपना टोटल स्पेंडिंग हमारे प्लेटफॉर्म पे बढ़ा रहे हैं. आप अगर लेटेस्ट ईयर में भी देखें FY 23 में कि जो कस्टमर 100 रुपया खर्चा किया वो अभी 205 रुपया खर्चा कर रहे हैं. तो across the multiple services that we are offering on food delivery, on Instamart, quick commerce, on dining out, we have been able to get a lot more users engage with us more frequently. तो आप फ्रीक्वेंसी भी देखें कि कितनी बार महीने में आते हैं कस्टमर्स. तो आप देखेंगे कि अगर 10 बार आ रहे थे महीने में, तो अभी 17 बार आ रहे हैं 5 साल के बाद. तो सेम कस्टमर जो 10 महीने में 10 बार करते थे अभी 17 बार कर रहे हैं. और जो पिछले साल भी आए वो भी 12% हायर फ्रीक्वेंसी दे आर स्पेंडिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म. इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स, हर 100 लोगों में से 27 लोग एक से ज़्यादा सर्विस यूज़ कर रहे हैं हमारे ऐप पे. और ये नंबर डबल हो गया है लास्ट के 15 से 18 महीने में. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं. In terms of Instamart, which is a grocery use case, much larger market size, today 1 out of 4 consumers in Instamart are coming new on Swiggy to use Instamart for the first time. And half of them start using food delivery after they come on Instamart. So the flywheel effect होता है कि food delivery is sending users to grocery and grocery is sending back users to food delivery. So that is also starting to play out because we have a one app strategy. Now if you look at the geographical overlap across various businesses, food delivery 680 cities में है, Genie जो concept service है वो 70 cities में है, Dine Out is in 52 cities and Instamart is in 32 cities and growing. So when we launch a new city, we already have a user base who is attached to us on various services, and we are able to cross-sell them the new service when we launch it in that new city. So the geographical overlap and the innovation that we'll continue to launch means that we already have a set of users who we can do more selling of our services and the innovation that we keep launching. In terms of, if you look at our restaurant partner base has continued to increase. We had 224,000 restaurant partners who transacted with us in the month of June. This number has grown by 70% in the last 2 years. Similarly, in terms of driver network that we have, 457,000 drivers transacted with us, delivered on our platform, and this number has grown by 90% in the last 2 years. So we are seeing pretty significant growth across the ecosystem, whether it's restaurant partners, delivery partners, or the merchant partners. Our dark stores have increased. We currently have 605 dark stores. So across the country, around the 32 cities that we operate, we have 605 dark stores which are operating across the country. In terms of our overall growth, last year we did 35,000 crores of gross order value across the 3 big businesses in the consumer segments. Within that, food delivery was at 25,000 crores. It has grown at a growth rate of 16% for the last 3 years. Quick commerce did roughly 8,000 crores or close to $1 billion last year, and it has grown at 122% in the last 3 years. And dining out did roughly 2,200 crores and grew at 98% over the last 2 years. So across the businesses, we are seeing very strong growth, and we also expect this to continue in the future. So with growth, we have also seen our margin improve. Top investors from across the world and almost the entire investor set in India have participated. And the way an IPO works is that you have to take collective feedback and price it so that you get as many people as you can. And I think the management has been conscious to price it in a way that makes it attractive for so many people to participate. And we're definitely hoping that the retail and HNI community also will see that as the issue opens. Create new consumption occasions or use cases by giving them stuff that they didn't know they wanted. For example, like हमने एक innovative चीज launch किया पिछले 3-4 हफ्ते में called Bold on Swiggy Food, where we have learned everything from our quick commerce business to offer food delivery in 10 minutes across the big cities of India.
एक ये realization था कि as quick commerce became bigger and bigger, maybe consumers started feeling like food delivery is getting slower even though it is under 30 minutes. Because quick है, but ये तो बहुत quick है was the feedback. Then we thought about if we have the restaurant net to go for the ride, now they can plan their lives around it. Or if let's say you're going in between meetings on a busy office day, you forgot to get your lunch and you have only half an hour to get your lunch, you can plan your life around it. So I think habits of consumers constantly keep changing. If there's anything, consumers only keep wanting more and more in everything. So, through all of this, we hope to grow faster than, the overall restaurant industry growth itself to be close to 17 to 22%. On the chart on the right, you can see what we are playing for in the quick commerce category. Iska definition thoda different hai. This is already a very large market that will continue to grow at a healthy clip. But our estimates suggest that by last consumer technology and services platforms and amongst the top 25 most valuable brands in India. I'm sure there are several happy users in the audience who can easily relate to it being a convenience-first platform that fulfills use cases across food delivery, quick and group CEO. Mr. Rahul Bothra is the group CFO of the company, and Abhishek Agarwal is the head of investor relationships. Coming to the details of the issue, the IPO consists of a fresh issue of 4,499 crores and an offer for sale of 175 million odd shares. The price band is 371 to 390, and the issue will open on the 6th of November and end on the 8th, with the anchor being on the 5th. With this, I would request Harsha to walk us through. So, happy Diwali to everyone listening in. It really means a lot for us that you've taken time out to come listen to the story. Over the next 15-20 minutes, me and Rahul, our CFO, will run you through the company presentation, give you a little bit of history, background, our plans for the future, etc. So even before we go into any of the slides, first मैं Swiggy का founding story दो मिनट मैं बताना चाहूँगा. We turned 10 only 2-3 months back. So August 2014 में company started. 3-member co-founding team, me, Nandan, my co-founder, जो अभी भी हैं हमारे साथ. Innovation one-stop solution नहीं था, तो हमें लगा कि interesting problem है और उसके अंदर गए हम. But 9 महीने के बाद हमें लगा कि ये इतना शायद अच्छा मार्केट नहीं है, but logistics में हम ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो गए थे, तो हमने सोचा कि इसमें क्या कुछ अनोखा बनाए. तो at that time 2014 में Uber, Ola, etc. were the big story in town. So on-demand mobility was the new magic. But उस वक्त और on-demand delivery करके कोई चीज़ ही नहीं थी. But suddenly there was magic कि आप you can push a button on your phone and suddenly cars are moving on the road closer to you. वो देख के हमें लगा कि अगर ये हो रहा है तो क्यों ना हम एक बटन दबाए और things move inside the city super fast. जब ये बिल्कुल obvious नहीं था कि ऐसा करना है या कर भी सकते हैं, ये महंगी होगी सस्ती होगी कुछ नहीं पता. हम बस फाउंडर्स थे, हमने सोचा कि यार ऐसा तो होना चाहिए. And because we were living the bachelor life at the time, तो हमें food delivery दिख गया बहुत बड़ा सा. यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम है. Maybe we'll try solving इस मार्केट को, इसके बाद देखते हैं क्या करेंगे. तो हमने नाम भी जब स्टार्ट किया था short and catchy रखा था कि अभी पता नहीं like we won't be whether we're going to be like a food only company or a delivery only company. Broad और open रखते हैं, उसके बाद देखना चाहिए. And I think ये हम जब आए थे ऑलरेडी 10-15 लोग थे फूड डिलीवरी मार्केट में जो 2014 में. आज हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी जो है जोमेटो, वो ऑलरेडी 6-7 साल से ऑलरेडी थे. कुछ अलग बिजनेस में थे जहाँ लिस्टिंग्स और रिव्यूज वगैरह कर रहे थे. अगर आप बोले तो हमको आज इस वक्त रहने के कोई चांस ही नहीं था. बट हमारा ओपनिंग था कि हमने डिफरेंट रूट लिया मार्केट को ओपन करने के लिए कि फूड डिलीवरी मार्केट को अगर बड़ा बनाना है तो कस्टमर को सर्विस देना पड़ेगा जो उनके लायक है, तो उसके लिए खुद ही डिलीवर करना पड़ेगा. दैट वाज द बिग मूव दैट वी टुक दैट गिव अस द ओपनिंग ऑन दैट डे. बाकी सब ने नहीं माना और हमने बस यही सोचा कि ऐसा ही होगा मार्केट. तो
3 साल बाद वो अगले 3 साल में जो हमको सक्सेस मिला, एक्सपेंशन मिला, उसके बाद वी टुक अ स्टेप बैक, कोर टीम, मैनेजमेंट टीम, फाउंडिंग टीम, सबकी अभी कंपनी का ओवरऑल मिशन स्टेटमेंट क्या है, व्हाई डू वी एग्जिस्ट, व्हाट इज आवर रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, वो है. एंड देन वी केम अप विद द मिशन स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू टू दिस डे. Swiggy exists to elevate quality of life for urban consumers through unparalleled convenience. If you look at even India in the last 10 years, living in the Indian cities has only gotten more inconvenient on the roads if you go out. However, if you look at it digitally, India जैसा कोई देश नहीं है जो डिजिटल कन्वीनियंस दे. इतने सारे सर्विसेज हैं, मतलब 10 मिनट कैटेगरी तो है ही इंडिया के बाद आज के दिन. या अर्बन कंपनी जैसे कंपनीज नहीं हैं जो इंडिया के बाद. सो टू हैव एट अ टाइम व्हेन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सप्लोडिंग, टू बी एबल टू मेक इंडियंस एंजॉय देयर लाइव्स इंक्रीमेंटली मोर with, let's say, convenience at their fingertips is deeply fulfilling for us as a company, for me as a founder, and in आगे जाके भी the next 10-20 years is also going to be everything about solving this problem for us. हमने कई बार ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया. पहले हमने फूड डिलीवरी में एक मार्केट ओपनिंग खोला, उसके बाद हमारा कंपनी का एक इनोवेशन फोकस्ड कल्चर है जिसके वजह से एट एनी पॉइंट इन टाइम वी आर ऑलवेज एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू थिंग्स दैट कंज्यूमर्स मे वांट, मे नॉट इवन नो दैट दे वांट इट, बट टू गो एंड एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट हम कैसे बेटर कर सकते हैं इज लाइक अ बिग पार्ट ऑफ हू वी आर. वैसे ही हमने आइटरेट करके, पिवट करके एक ऑफरिंग को स्विगी स्टोर्स करके खोला था जहाँ हम नेबरहुड सुपरमार्केट्स और फार्मेसी स्टोर्स से डिलीवर करते थे, जिसको पिवट करके इंस्टामार्ट करके हमने स्थापित किया था 2020 में. तो ये इनोवेशन हमारे डीएनए में है और आगे भी रहेगा टू ड्राइव ग्रोथ कंटिन्यूसली फॉर द नेक्स्ट 10-20 years. स्विगी का अगर ओवरऑल हाई लेवल ग्रोथ स्ट्रैटेजी देखा जाए तो today everything we do serves, let's say, the top 150 million to 200 million consumers in the country. और अगर ये आगे देखा जाए तो if you believe the GDP per capita story, 10-15 साल बाद ये 300, 400, 500 million consumers के लायक होगा. Even if you look at, let's say, our slowest growing category, जो कि slow नहीं है but slowest in the mix that we have, is the food delivery category. Food delivery category में ही like we are very early in the journey of the industry. India में क्या हुआ, online delivery happened before restaurant industry exploded in a big way. आज के दिन भी अगर देखा जाए तो China में have a lesser population than us, they have 30 times more restaurants than India. तो अभी आगे जाके जो growth होने वाला है, तो GDP per capita growth, restaurant industry, discretionary income growth के ऊपर बढ़ने ही वाला है. और उसके ऊपर हमको नया इनोवेशन करके और एग्जीक्यूट करके उस तेज जाने वाली मार्केट से और तेज जाना. तो आई थिंक ओवरऑल आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द कैटेगरीज दैट वी प्ले. आप इसको समझ सकते हैं कि इट्स अ बैरोमीटर फॉर द कंजम्पशन स्टोरी, द अर्बन इंडियन कंजम्पशन स्टोरी इन द नेक्स्ट 1-2 decades ऑन अ ग्रोइंग यूजर बेस विद ओनली 2-3 कैटेगरीज in the mix today, but ये कुछ भी हो सकता है if we believe our innovation DNA and continue to experiment and find new business lines in the future that give value to this audience. So that is maybe in like a 5-minute nutshell the overall story of Swiggy, and we are very excited to go into the numbers and the strategy. I think ये हमने already cover किया है थोड़ा सा, but if you break it down, second row में अगर देखेंगे तो largest businesses are food delivery, dining out, and grocery and household delivery, household item delivery, yeah, and there are some other hyper-local services like Genie, जहाँ आप as a consumer you can move parcels inside the city. अगर आप घर से lunch box मंगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ऑफिस में बैठकर. So there are other smaller allied businesses available, but these 3 are the largest businesses. We build on top of a large and vibrant ecosystem of restaurant partners, merchant partners, brand partners, and today more than 400,000 delivery partners.